Hello guys, very good evening to all of you. And today I'm going to start a very confusing topic, that is has and have. Okay, where we use has and where we use have. So there are total 3 uses of has and have in English grammar. Okay, so now I'm going to start the first use of has and have. Okay, so have, where we use have with only subject category I, you, we, they and plurals. Okay, and has we use with he, she, it and singulars with name of any person, that time we use has. Okay, yes, first use of have we use for tenses only. Okay, we use for tenses only, tenses. And which tense we use? Present perfect tense. Okay, and present perfect tense we use for any kind of activity, any kind of work I have completed. Yeah, present perfect tense we use for the conditions, finished action, unfinished action and life experience also. Okay, so present perfect tense follow the structure subject plus has, have plus verb third form plus object. Okay, what is the meaning of object? Object is any kind of things. I have completed work on time. मैंने अपना काम समय पे खत्म किया है. I have completed my work on time. She has completed her graduation. उसने अपनी graduation खत्म कर ली है. Okay, so has and have we use for present perfect tense, and the structure of present perfect tense, that is has, have plus verb third form plus object. Okay, so first use here we have completed. Okay, and has and have we use with the subject category. Okay, we use according to subject category. Okay, have we use with I, you, we, they and plurals, and has we use with he, she, it and singulars. Fine. Yes, now I'm going to start the second use of has and have. Second use, where we use for showing any possession. What is possession? कि मेरे पास कुछ है. Okay, and in these kind of sentences we can't use any verb. We can't use any kind of verb. Without verb we have to make the sentences. इनमें हम कोई भी verb use नहीं करते हैं. बिना verb के ही हम इन sentences को बनाते हैं और इनका मतलब होता है कि मेरे पास कुछ है. Yeah? So my first sentence is I have good friends. मेरे पास अच्छे दोस्त हैं. I have good friends. And same sentence I want to make in negative. नेगेटिव में सेम सेंटेंस को जब मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, सो आई कैन से आई डोंट हैव गुड फ्रेंड्स. ओके, I have good friends, I don't have good friends. She has money, she doesn't have money. Okay, so one thing is that when we make the positive with the use of has, so she has money, but negative में मैं use करूँगी have. She doesn't have money. Okay, so second use of has and have we use for possession. Possession means कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई भी चीज़ है, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं has, have plus object. We can't use any kind of verb in these kind of sentences. Okay, fine. Now I'm going to start third use of has and have. So that time we use has to and have to. Okay, has to and have to. हिंदी में हम कहते हैं मुझे कुछ करना पड़ रहा है. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. टू लर्न, टू थिंक, टू वेट, टू गो. सो सेम लाइक एग्जाम्पल, आई हैव टू गो अर्ली. मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है. आई हैव टू गो अर्ली. शी हैज़ टू वेट फॉर मी. उसे मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा है. शी हैज़ टू वेट फॉर मी. सो and we use has and have according to subject category. I, you, we, they we use have. Always remember, I, you, we, they we use have. He, she, it we use has also. Okay, so there are total 3 uses of has and have. First use of have we use in tenses. Okay, that time we use verb third form. We use second use for has and have to show any kind of possession. Okay, मेरे पास कुछ है. और वर्ब हम कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. सिंपल सेंटेंसेस हम यहाँ बनाएंगे. आई हैव गुड फ्रेंड्स, आई डोंट हैव गुड फ्रेंड्स. शी हैज़ मनी, शी डजंट हैव मनी. ओके, एंड यूज थर्ड यूज ऑफ हैज एंड हैव वी हैव टू यूज हैज़ टू एंड हैव टू. ओके, और मैं हिंदी में बताऊँ मुझे कुछ करना पड़ रहा है, मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, मुझे बात करना पड़ रहा है, कुछ भी मुझे करना पड़ रहा है. दैट टाइम वी हैव टू यूज हैज़ टू एंड हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैटेगरी. Okay, so